1 minute. साइड पे ये मतलब अच्छा स्क्रॉल होने को लगता है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा हम्म, अच्छा ठीक है। Okay, friends. Now come to the topic. Today we are going to discuss that is concentration of mixing, concentration on mixing of solutions. Okay, concentration on mixing of solutions. Uh, Suppose we are taking two or more than two solutions. Okay, we are taking two or more than two solutions having different concentration and different volume, but having the same solute. Suppose हमें HCl की H2SO4 concentration नेले तारा different concentration नेले one is 100 milliliter another is 200 milliliter ଆଉ different concentration भी नेला परे ଆମେ ତାକୁ mix କରୁଛେ so upon mixing what will happen now upon mixing volume will be added ଆଉ କଣ add ହବ number of moles will be added yes or no volume will be added and number of moles of the solute will be added ताले एबे जो न्यू कंसंट्रेशन हबो केमति कैलकुलेट करिवा ना दैट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैला अच्छा ताले जदि हमें नेले थ्री सॉल्यूशंस तो वन इज m1 v1 1 minute to reduce some जान परने कोन होचे के हां नहीं हां टिके रही जंदु माने लास्ट क्लास की कर आज प्रॉब्लम नहीं तो पूरा फुल स्क्रीन करते फुल स्क्रीन कला बेलू ये साइड कटि ये साइड ये कटि ना सेपट साइड हाँ ताको उठे जाए आपको आपको स्क्रीन फोटो कर दिया साइड देखा जाओ ना 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 लास्ट क्लास की प्रॉब्लम है नहीं आरे पर पड़ेगी ठीक है क्या बने साइड 48 अच्छे
Okay, friends. Today, due to some unavoidable, technical error, we are facing difficulty. So now, am I audible? Okay. So we are going to take two or more than two solutions, and we are going to mix them. Upon mixing, what will happen to the final concentration? That we are going to discuss. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି suppose ଆମେ HCl ତିନିଟା solution ନେଲେ, so first solution ର molarity M1 volume V1, second molarity M2 volume V2, third molarity M3 volume V3. So ତିନିଟା ତ mix ହେଇଯିବ. What will be the total volume? That is V1 plus V2 plus V3. But ଆମେ molarity କୁ add କରିପାରିବାନି. Volume add କରିପାରିବା, number of moles କୁ add କରିପାରିବା, but molarity କୁ add କରିପାରିବାନି. ଯଦି molarity add କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ molarity କଣ ହବ ନା ଫାଇନାଲ molarity is sum of the total number of moles of the solution 1 2 3 divided by sum of the volume of the solution 1 2 3, right? तब हम फॉर्मूला कौन यूज करिवा ना m1 v1, we know that molarity is number of moles of the solute divided by volume of the solution. The number of moles of formula कौन हबो ना number of moles equal to molarity into volume of solution in liter. So এটা কোন হলো m1 v1, that is number of moles, m2 v2 number of moles from the second solution, m3 v3 number of moles from the third solution, m that is the final molarity of the solution, v final volume of the solution. बुझा पड़ला? ताले हमें दी टू और मोर देन टू जिते भी सॉल्यूशन ताको यदि हमें मिक्स करिवा ताले तापे को फार्मूला यूज करिवा ना m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 जहाँ भी थिबो. So what is v here? ना v equal to v1 plus v2 plus v3. बुझा पड़ला? So v for this particular solution, three volumes we have taken. So total v equal to v1 plus v2 plus v3. Right? Now we are going to discuss one question. The question is mentioned: calculate the final concentration of the solution which is obtained by mixing by mixing 250 milliliter of 0.02 m, then 300 milliliter of 0.03 m, and 450 milliliter of 0.05 m nitric acid. Okay, students, just take a notes of these questions quickly. Then we are going to discuss how to solve this. Okay, students, quickly note down the question. Calculate the final concentration of the solution which is obtained by mixing 250 milliliter of 0.02 m, 300 milliliter of 0.03 m, and 450 milliliter of 0.05 m nitric acid. Okay, so we can use the above formula. What is the formula? m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 equal to m into v. So what is m1 here? m1 is 250. We can keep all the volume in the single unit, that is milliliter. 250 into 0.02 plus v2 is 300 into 0.03 plus 450 into 0.05 equal to total volume केते गेला 1000 into final concentration m. ताले हमें एठी किसी कैंसिल करि परिबा, राइट? और 5 रे कैंसिल कले it will be 20 9 6, this is 5. So after calculating you will get the value of m as 0.0365 molar. So the concentration is 0.050365 molar. Is that clear? So this way you can find the concentration of the solution after mixing it. Clear? Okay. Now another concept is there, that is concentration upon dilution or concentration. Previous.
बुझे पचर क्या बुझे पचर okay. Now, friend, the next concept is the concept of dilution or concentration. Suppose, ଯେମିତି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ସପୋଜ ତମେ କିଛି ଘରେ ସ୍କ୍ୱାସ ବନଉଛ ରାଇଟ ଆଚ୍ଛା ସ୍କ୍ୱାସ ବନେଇବା ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲ ନା ୟୁ ହାଭ ଆଡେଡ ମୋର ସ୍କ୍ୱାସ ଯେତିକି ସପୋଜ 2 ସ୍ପୁନ ଆଡ କରିବାର ଥିଲା ୟୁ ହାଭ ଆଡେଡ ଅଲରେଡି 3 ସ୍ପୁନ ତ ଯଦି ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ତମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଜ କରିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଘରେ ତମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜେନେରାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେ দ্যাট মিন্স সে কনসেন্ট্রেটেড ଅଛି ଆମେ ସେଠି କଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଜେନେରାଲି ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଜେନେରାଲି ସଲ୍ୟୁଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏନି ଇନ ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁଟ କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ବଟ ଇନ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଆଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ଦେଖୁଛେ ସଲ୍ୟୁଟ ସେମ ରହିବ ବଟ वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାସ ଅଧିକ ଆଡ କରିଦେଇଛେ କି ତମେ ସପୋଜ କିଛି ଲେମନ ୱାଟର ବନଉଛ ଘରେ ତ ଅଧିକ ସଲ୍ଟ ଆଡ କରିଦେଇଛ ତ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ କୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଆଣିବା ନା ଇନ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ ଇନ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ some more water to it okay one student have written not understood now going to the concept again concept of dilution or concentration ବୁଝିପାରିଲ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ବନଉଛେ ତ ସଲ୍ୟୁସନ ବନେଇଲା ପରେ ଯଦି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସଲ୍ୟୁଟ ଆଡ ହେଇଗଲା ଯେତିକି ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା ସୋ वी हैव ऑलरेडी added more solute ଯଦି ମୋର ସଲ୍ୟୁଟ ଆଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆମ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ କେମିତି ଆସିବା ନା ଆମେ ସେ କେସ ରେ କିଛି ସଲଭେଣ୍ଟ ଆଡ କରିଦବା ସପୋଜ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସଲଭେଣ୍ଟ ୱାଟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ ଦ୍ୟାଟ ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସପୋଜ ତମେ କିଛି ସଲ୍ଟ ୱାଟର ବନଉଛ କି ତମେ ଲେମନ ୱାଟର ବନଉଛ ସେଠି ଅଲରେଡି ଅଧିକ ସଲ୍ଟ ତମେ ଆଡ କରିଦେଇଛ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଆଣିବା ନା ଆମେ କିଛି ସେଠି ୱାଟର ଆଡ କରିଦଉଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ थिंग दैट वी आर डूइंग ओके अच्छा सिमिलरली ଆମେ ଯଦି ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବନେଇବା हाई कंसंट्रेशन केमती बनैबा ना गोटे वे हैला वी कैन ऐड सम सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन पई और अनदर वे वी कैन रिमूव सम सॉल्वेंट तको सॉल्वेंट को हम रिमूव केमती करबा ना हमें ताको टिके बॉयल कर दवा सॉल्यूशन को बॉयल कर देले कोन हबो ना किछि सॉल्वेंट एवापोरेट हे जिवो वेपोराइज हे जिवो सो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बुझि परलो ताले हमें एठी देखिले कोन हमें डाइल्यूशन करो कि कंसंट्रेशन करो वी आर गोइंग टू फिक्स in general we are going to fix the amount of the solute और जहां भी चेंज होची बाय मेकिंग द सॉल्वेंट ताले सॉल्यूट रो अमाउंट कांस्टेंट रहिबो ता माने कहि परियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर रिमेनिंग कांस्टेंट बुझि पाला ना नहीं जेमते कहले सपोज सॉल्ट वाटर अधिक सॉल्ट हेची हमें तो कोन करते वाटर एक्स्ट्रा ऐड करते तो से केस रे कोन होची ना ना सॉल्ट सेम रहिला हम वाटर रो वॉल्यूम चेंज हे गेला ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट इज रिमेनिंग कांस्टेंट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन the number of moles of formula कौन ना it is the product of molarity and volume ताले देखो m1 v1 this is the condition at the beginning हमें लिख पेरे this is initial and this is final so initial और final both case रे number of moles constant रहउची बुझि परलो जेम हम concentration जदी higher करिबा ताले भी सेम रहिबो so the concept or the formula used for dilution or concentration that is m1 v1 equal to m2 v2 I hope it is clear ताले question discuss करिबा so the question quickly you can note down calculate the final concentration when 300 milliliter of water is added to 200 milliliter of 0.03 m HCl हम HCl solution नै छे जार वॉल्यूम अछि 200 milliliter आ मोलारिटी अछि 0.03 m right तो ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା we have further added 300 milliliter of water तो आज ଆମେ 300 milliliter water add कले ताले एटी कोन हेला डाइल्यूशन हे गेला concentration decrease होबा डाइल्यूशन हे गेला ताले डाइल्यूशन हेले तार फाइनल concentration कोन होबा सिंपल क्वेश्चन ताले हम को फार्मूला यूज करबा m1 v1 equal to m2 v2 ताले m1 v1 equal to m2 v2 हम यूज करछे ताले केस रे देखो m1 केते अछि m1 अछि 200 आउ v1 केते अछि ना v1 अछि v1 अछि m1 अछि 0.03 v1 अछि 200
What will be the final volume? Now already 200 milliliter thila and you have added 300 milliliter. So final volume becomes 500 and final molarity that you have to calculate. Tale solve kale what will be the value? Now it is coming 0.018. It is coming 0.018 molar. Student बुझ पारलो? तो previous class रे आमे discuss करथिले how to calculate the molarity. So molarity formula टिके मु revise कर दउची. Molarity formula कोन थिला? ना number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. सेटा गोटे single solution पे नै थिले. आमे आज कोन देखिले? ना एटा हला आमे तो dilution करते. माने गोटे solution नउचे सेतरे किछि solvent add करूचे और आमे different solution नउचे different solution नै कि तो mix कर दउचे. तो डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स कला पर कोन होची ना फाइनल जो कंसंट्रेशन आछुची ताको हमें केमते कैलकुलेट करिवा बुझा पड़ला हला अच्छा तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज सम ऑफ द रिएक्शंस फर्स्ट टाइम देखिबा कंबस्शन रिएक्शन तो अब तमे ऑलरेडी जूनियर क्लास रे पढिथिबो किछि रिएक्शंस अछि जेमति कॉम्बिनेशन रिएक्शन decomposition reaction, displacement reaction, oxidation reaction, and reduction reaction. So, what is the basic difference between combustion reaction and oxidation reaction? Now, oxidation reaction re oxidation definition तमे कोन कहि परिबो? ना oxidation definition हला removal of less electronegative element like hydrogen and addition of more electronegative element like oxygen. तो ऑक्सीडेशन में हमें कौन करिवा ना किछि भी हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करि परिबा से सल्फर हे परिबो हाइड्रोजन हे परिबो नाइट्रोजन हे परिबो ऑक्सीजन हे परिबो और रिमूव करिबा लाइक हाइड्रोजन भली एलिमेंट को बट कंबस्शन रे कोन होची ना कंबस्शन रे इट इज द कॉम्बिनेशन विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जे तमे हाइड्रोकार्बन रो कंबस्शन देखिबा तो हाइड्रोकार्बन कंबस्शन में कोन देखिबा ना इट इज ट्विन को हाइड्रोकार्बन कंबस्शन रे तुमको हाइड्रोकार्बन माने हम को हाइड्रोकार्बन नबा ना हाइड्रोकार्बन हे पारे अल्केन अल्किन अल्काइन साइक्लोअल्केन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हे पारे सेतबे हम इन जनरल कर नै छे ना हाइड्रोकार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज CXHY हाइड्रोकार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज CXHY राइट अच्छा ताले हम यदि ताकु नेले CXHY in 1 minute. So I'm at hydrocarbon nele CXHY. So in that case, what will be the product upon the combustion reaction? So I mean any hydrocarbon. Hydrocarbon means that is consisting of two elements. One is carbon and the other is hydrogen, and no other element is present. So hydrocarbon का combustion कले, the result will be always carbon dioxide and water. Is that clear? The result will be always carbon dioxide and water. ताले हमें तो कहते balance करिबा, तो balance करि परिबा. So it hydrocarbon रे, suppose you are taking alkane. What is the formula for alkane? Now the formula for alkane is CnH2n plus 2. The formula for alkane is CnH2n plus 2. When it undergoes combustion, so it will form, as I told, CO2 and H2O. CO2 and H2O. So what will be the number of
Recording in CO2 progress. प्लस वाटर बाकी बैलेंस करि परिबो तेन बुझ परलो तो सिमिलरली जहां भी तमर हाइड्रोकार्बन दियाइथो ताको हमें कंबस्टन जदी करिवा you will get carbon dioxide and water as a result of the product clear ताले बे देखो गोटे क्वेश्चन देखिबा एटा क्वेश्चन अछि calculate the mass of carbon dioxide obtained upon combustion of 120 gram of ethane देखि जाउतर क्वेश्चन calculate the mass of carbon dioxide obtained upon combustion of 120 gram of ethane clear so quickly try करि परिबो try it quickly quick so what is the try kala samaste now let us discuss what is the formula for ethane now that is C2H6 when it is undergoing combustion with oxygen it will form CO2 and H2O so now you can balance it 2 CO2 and 3 H2O clear and oxygen will be 7 by 2 କେମିତି ଇଏ କରିବ ଲେଖିବାର ଅଛି ନା ଲେଖିବାର ଅଛି ନା okay okay now student I'm going to write the equation again ethane C2H6 plus O2 gives rise to CO2 plus water so it is 2 CO2 3 water and 7 by 2 oxygen चल देखो हमें देखिबा व्हाट इज द एटा में मोल मोल रिलेशन ने जे सॉल्व करिबा इट विल बी इजी टू कैलकुलेट ताले देखिबा कोन ना व्हाट इज द मास ऑफ मोलर मास ऑफ इथेन दैट इज 30 ग्राम ओके यदि 120 ग्राम देइची तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ना 120 by 30 that is 4 moles so it is the balanced equation so balanced equation हम देखिबा 1 mole of ethane reacts with 7 by 2 moles of oxygen to give 2 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. So our concern is ethane and carbon dioxide. So 1 mole of ethane gives rise to 2 moles of carbon dioxide. If 4 moles achi ethane ro how many moles of carbon dioxide will be produced? Na double hejibo. Double man 8 moles. 8 mole man mass kete hobo? Na 8 into 44 gram. So this is one way you can solve this question by taking the help of mole mole relationship. तो पचरा जीवो आपको मास मास रिलेशनशिप केमते सॉल्व करिवा करि परिबा केम सॉल्व करे देखो ना एठी हम ले 30 ग्राम तो 30 ग्राम अछि 30 ग्राम balanced equation will give 2 into 44 gram of carbon dioxide तो मैं एमती लिख परिबो मास मास रिलेशनशिप रे 30 ग्राम of C2H6 gives rise to 88 gram of CO2 ताले 120 ग्राम के दबो 1 ग्राम नहीं करि पारे यूनिटरी मेथड रे 120 ग्राम will give 88 upon 30 into 120 so that is 4 so same answer ଆସିବ so you may solve the question by help of mass mass relationship or mole mole relationship answer will be same but in general कोन हमें सजेस्ट करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई सब बेले तमे ट्राई करिवो यदि पॉसिबल होबा ट्राई करिवो टू टेक द हेल्प ऑफ मोल मोल रिलेशनशिप काहे कि ना इजी कैलकुलेशन हबो मास मास रिलेशनशिप रे भूल हबनी बट सेट कोन हबो ते कैलकुलेशन लेंथी हो जाए जोटा कि मोल मोल रिलेशनशिप रे तमर कैलकुलेशन ठीक है इजी हुए
short calculation. Okay. Then clear? Okay. So let us. Okay, 1 minute. अच्छा, which one? Okay. Saroj Nayak, you have written. Please explain one more. One more means ଆଉ ଗୋଟେ example ନବା କହୁଛ. Okay, ଆଉ ଗୋଟେ example ନବା. ଠିକ ଅଛି. ଆଉ ଗୋଟେ example ନେଇପାରିବା. White board. ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ question example ନେଇପାରିବା. No problem. ଏମିତି ଯଦି question ଦେଇଛି, ଏମିତି question ଦେଇଛି, how much of carbon dioxide will be produced upon combustion of 39 gram of benzene. Okay. So how much of carbon dioxide will be produced upon 39 gram of benzene? Then can you try this question quickly? Note down the question. अच्छा, ताल देखिबा solution. Benzene formula कोन ना, it is C6H6. When it combines with oxygen, it will give CO2 and H2O. So you can balance it 6 CO2, 3 H2O. So it is 12 plus 3, 15 upon 2. Balanced equation है Then go what is the molar mass of benzene? Now that is 72 plus 6, that is 78. So 39 अच्छी. तमें नबा first mass relationship. एम लिख परिबा balanced equation रो हमर कंसर्न अछि benzene and carbon dioxide. आमे लिख परिबा 78 gram. So it will be 6 moles, 6 into 44 gram. कहेंगे ना 1 mole of benzene gives rise to 6 moles of carbon dioxide. ताले 78 gram will give 6 into 44 gram of carbon dioxide. This is one. This is the mass. आमे नहीं परिबा मोल relationship. जे देखिए 39. अच्छा एटा ला 6 into 44 gram. But देई जमर केते 39. So 39 gram can give 6 into 44 divided by 2 gram. बुझी पारलो? So that will be 44 into 3. That is the mass of carbon dioxide to be produced. So the first method is by mass relationship. Next है mole. एटी देखिबा 39 gram माने केते ना 39 gram means 39 upon 78. So that is 0.5 mole. ताल देखो balanced equation कौन देछि 1 mole of benzene produces 6 moles of carbon dioxide. ताल 0.5 mole of benzene will give how many moles of carbon dioxide? Now that is 6 into 0.5 mole. That is 3 mole of carbon dioxide. Which fellow? That is 3 moles of carbon dioxide. 3 mole of carbon dioxide means that is 3 into 44 gram. Friend, I think it is clear. The doubt pachar thilo. Is it clear now? Okay, Saroj. Okay, now let us go to the next. Actually, we cannot take many number of questions. Now, at the end of the topic, we can go for other questions. କାରଣ ଗୋଟେ ଆମର ଅଧିକ ଟପିକ ବି ଅଛି ଡିସ୍କସ କରିବାକୁ. Okay. So next is calculation of percentage yield. Calculation of percentage yield. So what is the concept of percentage yield? ଯେମିତି
तो तुम मैंने एक्सपेक्ट करूथिबो जे 10th क्लास रे कि मैथ रे आउट ऑफ 100 100 एक्सपेक्ट करूथिबो सेटा कोन थिला तमरो एक्सपेक्टेशन ताको हमें थियोरेटिकल वैल्यू कहि परिबा बट तमरो 100 जगह रे आसला 99 सेटा कोन हला एक्चुअल हला तो थियोरेटिकल तुम एक्सपेक्ट केते करूथिलो 100 तो को टिके इम्प्लाइज की किसी इक्वल साइन की ब्रैकेट दो भूल जाइथिबो तो 100 रो केते आसीला 99 आसीला जो 99 आसीला दैट इज द एक्चुअल वैल्यू आ एक्सपेक्ट केते करूथिलो 100 दैट इज द थियोरेटिकल वैल्यू सिमिलरली आमे सपोज गोटे कंपाउंड नौचे गोटे कंपाउंड रिएक्शन करूचे तो कंपाउंड रिएक्शन कला पर कि कंपाउंड को आमे एतले ताको डिकंपोज करूचे आमे एक्सपेक्ट करूचे कोन ना से 100% डिकंपोज हबो कि 100% कन्वर्ट हबो कि देखला 100% न कि किछि अदर वैल्यू रे कन्वर्ट हो तो जो अदर वैल्यू रे कन्वर्ट होची तार यील्ड केते हला तार परसेंटेज बनिला केते तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ परसेंट यील्ड हला तो देखि परिबो इन जनरल व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी वी डू नॉट ऑब्टेन actually the theoretical amount of the product. The amount of the product that is actually obtained is called the actual yield. Knowing the actual yield and theoretical yield, the percentage yield can be calculated. जेम तमे एक्सपेक्ट केते करूथिलो सपोज 100 आसिला केते 95 ताले परसेंटेज केते हला 95 हला सिमिलरली हम एटा थियोरेटिकल और एक्चुअल नबा तो परसेंटेज यील्ड रो फार्मूला कोन ना एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 आई होप परसेंट यील्ड रो कांसेप्ट बुझी परलो परसेंट माने जते हम एक्सपेक्ट करूथिले आउ केते हम एक्सपेक्ट करूथिले आउ केते मिलला केते एक्सपेक्ट करथिले केते मिलला सपोज हमें नबा वाटर फॉर्मेशन नबा वाटर फॉर्मेशन केमती होची ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर जदि बैलेंस्ड इक्वेशन देखिबा तो बैलेंस्ड इक्वेशन रे कोन अछि कुआ ना बैलेंस्ड इक्वेशन हला 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2 ओड कॉमन एग्जांपल नउचे ठीक अछि त माने कहि परिबा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर बुझि परलो हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन नेले 32 ग्राम ऑक्सीजन नेले बट सेठी वाटर 36 जगह रे सपोज 30 ग्राम बनउची बुझि परलो हम एक्सपेक्ट केते करूथिले थियोरेटिकली हम एक्सपेक्ट करथिले 36 ग्राम बनिबो बनिला केते 30 ग्राम तो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ना एक्चुअल केते हला 30 थियोरेटिकल केते थिला 36 यील्ड केते हला ना एक्चुअल 30 डिवाइडेड बाय 36 into 100 दैट इज द परसेंटेज बुझि परलो ଗୋଟେ सिंपल एग्जांपल देली आ ଗୋଟେ क्वेश्चन में नैते when 5 gram of calcium carbonate is heated it gives 2 gram of calcium oxide calculate percentage yield of calcium oxide quickly आपको नोट कर दियो just take some seconds and try then we are going to discuss आंसर भी नोट हेची तमे आंसर देखिकी so quickly note down the question then I hope all of you tried so let us discuss चल देखो हमें जे कैल्शियम कार्बोनेट नबा so when it is heated so that will give calcium oxide and carbon dioxide okay so from the balanced equation you can write 100 gram of calcium carbonate will give 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide is that clear अच्छा ताले एठी कोन देछि ना at the place of 100 gram it is given 5 gram only so the 5 gram अछि calcium oxide केते बनिबा कथा ना it is 56
upon 100 into 5. Yes or no? 56 upon 100 into 5. So it is 20. So it should be 2.8 gram. तुमने कैलकुलेट कर देखि परिबो ता माने हमें तले 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूचे तो इट इज सपोज टू गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जेतल 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करिवा सो इट शुड गिव 2.8 ग्राम तो 2.8 ग्राम जोटा हमें एक्सपेक्ट करूचे दैट इज द थियोरेटिकल ओके दैट इज द थियोरेटिकल yield एक्चुअल केते ना एक्चुअल इज केते 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड ताले को परसेंटेज yield केते होबो ना एक्चुअल yield divided by theoretical yield into 100. Actual yield divided by theoretical yield into 100. So this is what the meaning of percent yield. So this is what the meaning of percent yield. Okay. So good. So now we are going to move the next topic. That is percent purity. That is percent purity. Okay. So basically student confused होती what is the difference between percent yield and percent purity. So these are the simple difference मधे कहिबे ଗୋଟେ simple difference ଅଛି percent purity देखिबा reactant रो percentage yield देखिबा product रो बुझि पला उथर कोन कहिबे percent purity देखिबा reactant माने reactant केते pure अछि कारण reactant is supposed to be converted to product so reactant केते pure अछि so that is the percentage purity आ product केते बनुची that is the percentage yield बुझि पल्लो तो percent purity percentage yield suppose आमे नेले हाइड्रोजन गोटे सैंपल ऑफ हाइड्रोजन नेले तो हाइड्रोजन सैंपल 4 ग्राम नेले राइट तो 4 ग्राम हाइड्रोजन सैंपल रिएक्ट कला विथ sufficient oxygen so it should give 36 gram of water then हम balanced equation देखिबा 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O so 32 gram of oxygen reacts with 4 gram of hydrogen to give 36 gram of water किंतु हमें 4 ग्राम सैंपल नहीं दैट इज नॉट द प्योर हाइड्रोजन 4 ग्राम सैंपल नहीं तो 4 ग्राम सैंपल रो किसी हाइड्रोजन सहित अदर इंप्यूरिटी भी थिला तो हमें देखिले फाइनली कोन ना एट द प्लेस ऑफ 36 ग्राम ओनली 27 ग्राम ऑफ वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बुझि पल्लो हम एक्सपेक्ट करथिले केते 36 ग्राम मिलला केते 27 ग्राम ताले परसेंटेज प्यूरिटी हाइड्रोजन केते बुझि पल्लो परसेंटेज प्यूरिटी हाइड्रोजन केते ताले so that is what the concept of percentage purity बुझि पल्लो स्टूडेंट अच्छा तो परसेंट प्यूरिटी फार्मूला देखि दियो mass of pure substance obtained divided by mass of given sample into 100 हमें केते सब्सटेंस हमर रिएक्ट करिछि आउ गिवन सैंपल केते नैथिले तो into 100 that is the meaning of percent purity ताले बे गोटे क्वेश्चन देखि परथिबो calculate the percent purity of carbon when the sample of 60 gram of carbon undergoes combustion it forms 400 gram of carbon dioxide how the repeat question तो देखि परथिबो calculate the percent purity of carbon when the sample of 60 gram of carbon undergoes combustion it forms 400 gram of carbon dioxide quickly student take some fraction of seconds just try yourself now we are going to discuss तो कार्बन रो सैंपल नै छे कार्बन सैंपल का सहित रिएक्ट करी छी ना ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन से रिएक्ट कला पर कोन बनी छी कार्बन डाइऑक्साइड बनी छी ताले हम लिख परिबो इक्वेशन C plus O2 gives rise to CO2 बुझि पल्लो ताले देखो जो हमर C बने नै छे कार्बन नै छे तो जदि हम देखिबा 1 मोल ऑफ कार्बन will give the मोल मोल नबा फर्स्ट तापर मास मास आछिबा 1 मोल ऑफ कार्बन gives 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट ताले 1 mole of carbon gives 1 mole of carbon dioxide तो एठी हमें कोन नै छे 60 ग्राम 60 ग्राम माने केते ना दैट इज 5 mole so 5 mole of carbon should give how many moles of carbon dioxide ना it should also 5 mole of carbon dioxide ता माने 5 mole of carbon should give 5 moles of carbon dioxide so 5 mole of carbon dioxide वन मास केते होबो into 44 gram okay so it is 220 gram
बुझी पारछो ता माने जदी एटी 100% प्योर कार्बन था 60 ग्राम के कंबस्टन हैला परे इट मस्ट गिव 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट बनिची केते को बनिची केते एटा 400 नुए 200 ग्राम बनिची केते 200 ग्राम ताले हमें एक्सपेक्ट करथिले केते 220 ग्राम बनिबा कथा जदी 100% प्योर थांदा बट बनिची केते 200 ग्राम ताले परसेंट प्योरिटी केते हबो ना एक्चुअल हैला 200 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल हैला 220 into 100 बुझ परलो एक्चुअल हैला 200 divided by 220 into 100 so this is what the uh, this is what the concept of percent purity बुझी पारलो स्टूडेंट so this is what the concept of percent purity जे चाहिबा आउट क्वेश्चन क्विकली लिखि दियो क्विकली लिखो तापर हम डिस्कस करिबा when a sample of 56 gram of nitrogen gas when a sample of 56 gram of nitrogen gas is treated with sufficient pure hydrogen to form 34 gram of ammonia to form 34 gram of ammonia calculate the percentage purity of nitrogen sample calculate the percentage purity of nitrogen sample चलो क्विकली देखो हमें डेले नाइट्रोजन reacts with 3 hydrogen to form 2 ammonia okay so एठी हम के देछे 56 gram so 56 gram means that is 2 moles so 1 mole of nitrogen hydrogen is present in sufficient quantity so no need to focus on nitrogen 1 mole of nitrogen gives 2 moles of ammonia yes or no 1 mole of nitrogen gives 2 moles of ammonia ताले 2 moles of nitrogen should give 4 mole of ammonia बुझी पारछो ना नहीं तो 4 mole माने केते ना that is 4 into 17 so 68 ग्राम बुझी पारछो अच्छा किंतु बनिची केते ना 34 ग्राम ता माने आमे जो नाइट्रोजन सैंपल लेछे से केते ना से सफिशिएंट दैट इज नॉट द प्योर ताले आमे देखिबा 68 ग्राम अमोनिया बनेबा पई केते दरकार थिला ना 56 ग्राम नाइट्रोजन दरकार थिला जेतला हमर 68 जगह रे 34 ग्राम अमोनिया बनेची ता माने नाइट्रोजन केते यूज हवा दरकार ना नाइट्रोजन शुड बी 28 ग्राम बुझी पारलो नाइट्रोजन शुड बी 28 ग्राम ताले 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्योर नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ताले आमे नेइचे केते 56 ग्राम जोटा कि थ्योरेटिकल बनिची केते ना कन्वर्ट हेची केते 28 ग्राम ताले प्योरिटी केते हबो ना 28 डिवाइडेड बाय 56 इनटू 100 दैट इज 50% प्योर ताले से नाइट्रोजन सैंपल रो प्योरिटी केते थिला 50% बुझा पड़ला स्टूडेंट okay so this is what the meaning of percent purity now I mean next topic को जीवा so that is one of the most important topic for both competitive exam as well as the board exam so that is none other than the limiting reagent okay that is none other than the limiting reagent we are going to first discuss the concept of limiting reagent then we'll discuss some numericals okay ताले फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट कोन इन जनरल आमे हम डे टू डे लाइफ रे कहूजे जे डोंट क्रॉस द लिमिट बुझी पड़छ ना नहीं त माने हम समस्त पई गोटे बाउंड्री बना हेची तो बाउंड्री को हम लिमिट भी कहूजे तो किछि कथा तो तुम निज निज भीतर किछि डिस्कशन कला बेले कि यदि अधिक किछि कहि देला त अदर फ्रेंड कोन कहूची डोंट फॉरगेट योर लिमिट
लिमिट माने गोटे बाउंडरी अछि राइट तो बाउंडरी पर्यंत हमें जाई परिबा तो लिमिटिंग रिएजेंट माने कोन गोटे रिएजेंट जे कि गोटे एक्सटेंड पर्यंत प्रोडक्ट बनेबो तार बियॉन्ड से प्रोडक्ट बनेबनी ता माने हम एमिति कहि परिबा द रिएजेंट व्हिच इज सपोज टू बी कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन गोटे रिएक्शन नौचे अच्छा ऑलरेडी तुम पढ़ी बैलेंस रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बैलेंस रिएक्शन ता माने सपोज हमें दीटा रिएक्टर नौचे ए एंड बी दोज आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट बुझी पाला ना नहीं आउट रिपीट करछि सपोज वी आर टेकिंग द टू रिएक्टेंट ए एंड बी व्हिच आर सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट पी बट एठी जदी हमें रिएक्टेंट नौचे टू और मोर देन टू रिएक्टेंट नौचे तो रिएक्टेंट भितरु किछि गोटे रिएक्टेंट थिबो जे कि कंप्लीटली कंज्यूम होथिबो आउ किछि रिएक्टेंट थिबो रिएक्शन सरला पर भी से पडिक रहउथिबो सो दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन तो जोटा आगो कंज्यूम हे जिवो सेटा लिमिट हे गला तार बाउंडरी जल्दी कंप्लीट हे गला तो ताको हम कोन कहबा ना लिमिटिंग रिएजेंट so the reactant which is supposed to be consumed first during the course of reaction again the reactant which is supposed to be consumed first during the course of reaction so that is known as the limiting reagent lekha hai so limiting reagent or limiting reactant is the reactant that gets consumed first in a chemical reaction and therefore limits how much product can be formed ताले जदि गोटे लिमिटिंग हे गला हमें लिमिट काहे कहउचे ना आउ जण किछि एक्स्ट्रा कहि देउचे हम तक लिमिट कहउचे एस और नो जण जे एक्स्ट्रा न कहबो दि जण सांग अछ कथा दाउचो तो गोटे जेंटल वे रे चलची चल सेति आ किछि तमे को नै रागी ना डोंट क्रॉस द लिमिट तमने जण एक्सेस कहि देउचे एते कहबो कथा जदि एक्सेस कहि देउचे एटा कोन हला तमे लिमिट फिक्स करछो बाउंडरी फिक्स करछो सिमिलरली एठी हम कोन कहले ना एक्सेस रिएजेंट माने कोन ना रिएक्शन सरला परे भी जे पड़ी के रहइबो so that is the excess reagent na kon kaiba the reagent which is left behind after the completion of the reaction तो ताको हम excess reagent कहते माने कोन हला हम नेले दीटा रिएक्टर ने कहले a and b नेले so a completely consume हे गला b किछि रही गला तो जति कि रही जिवो ताको हम कोन कहबा ना excess reagent तो limiting reagent excess reagent बुझ पाला concept बुझ पाला we will go to the question so once the limiting reagent is identified the product formation is completely dependent on the limiting reagent माने आमे अगर देखिबा गोटे रिएक्टेंट देइछ माने देखिबा कोन ना सेठी लिमिट से रिएक्टेंट रे लिमिटिंग रिएजेंट की तो लिमिटिंग रिएजेंट जानिला परे आमे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो so that will be completely dependent on the limiting reagent बुझ पाला ना नहीं जेमति हम इन जनरल मोटे एग्जांपल निये क्लास रे हम कहि परिबा सपोज आमे यूज करजे तमे गोटे डस्टर यूज करतो क्लास रे राइट तो ब्लैक बोर्ड हो कि व्हाइट बोर्ड हो डस्टर यूज करतो तो डस्टर जनरल दीटा पार्ट अछि गोटे हला कॉटन पार्ट अछि जोटा तमरो कहतो कॉटन पार्ट आ गोटे हला वुडन पार्ट हला तो गोटे वुडन पार्ट रहला गोटे कॉटन पार्ट रहला सपोज हम पाके दीटा मशीन अछि गोटे मशीन कॉटन पार्ट केते बनाउछि ना पर आवर 100 पीसेस बनाउछि गोटे वुडन पार्ट बनाउछि 90 पीसेस बनाउछि बुझि पाला ना नहीं कॉटन पार्ट बनला 100 पीसेस पर आवर आ वुडन पीसेस रहला 90 पीसेस पर आवर तल पो हमें पर आवर केतेटा डस्टर असेंबल करि पारि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डस्टर दैट कैन बी असेंबल्ड पर आवर केते रहबो एटा सिंपल जिंस 100 रहबो ना 90 रहबो यस को स्टूडेंट 100 रहबो ना 90 रहबो हमें कहले डस्टर हैला केते डस्टर बनिबो राइट अच्छा सो हमें कहले 90 पीसेस बनउची वुडन पार्ट 100 पीसेस बनउची कॉटन पार्ट ताले असेंबल हे परिबो 90 पीसेस काहेकि ना जोटा कम बनउची सेही डिसाइड करिवो कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन केते तो सिमिलरली द लिमिटिंग रीजन बुझ पाला ना नहीं तो जोटा आगो कंज्यूम हबो सेही डिसाइड करिवो सेही रिएक्शन को रेस्ट्रिक्ट करिवो आगो को जीवा को दबो सेही रिएक्शन स्टॉप हेइबो आ जोटा एक्सेस हे रहइबो से सेमति रिएक्शन रे पड़ी के रहइबो so that is the concept of limiting reagent student one student has written in chat box now I think it is clear so the substance good one has written 90 the substance which is consumed first during the course of reaction that is limiting reagent and once the limiting reagent is identified in the reaction the product formation will be solely dependent on the limiting reagent हैला अच्छा ताले गोटे आमे जिबा क्वेश्चन जिबा पूर्वरु आ गोटे सिंपल क्वेश्चन लिखिलो सिंपल क्वेश्चन when 1 mole of hydrogen
reacts with 1 mole of oxygen, 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen, then how many moles of water will be produced? So if anyone has doubt, then quickly ask and write for yourself. Don't write on behalf of any other student. ଯାହାର doubt ଅଛି ସେ ନିଜେ ପଚାର. That would be better, right? So କଣ ଲେଖିଲ? What will be the maximum moles of water produced when 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen? Quick. ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି question discuss କରିବା. ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା reaction H2 2 moles O2 gives rise to 2H2O. So 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. এটা হলো তোমার balanced equation. ତା ମାନେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯେତିକି ମୋଲ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ତାର ହାଫ ମୋଲ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ତ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା 1 ମୋଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1 ମୋଲ ଅକ୍ସିଜେନ ବୋଥ 1 ମୋଲ ତା ମାନେ କୁହ କୋଉଟା ଲିମିଟିଂ ହବ କୋଉଟା ତମର ଏକ୍ସେସ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତିକି 1 ମୋଲ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡି 1 ମୋଲ ଅଛି ବଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 ମୋଲ ଦରକାର ଥିଲା 1 ମୋଲ ଅଛି ତାହେଲେ so hydrogen is the limiting reagent ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତ ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन so hydrogen is the limiting reagent ଯଦି hydrogen limiting reagent ହେଲା so you have to find the product formation ତାହେଲେ product formation କାହା ଉପରେ depend କରିବ ନା product formation will depend completely on the limiting reagent ତାପରେ ଦେଖିବା so in the balanced reaction 2 moles of hydrogen gives rise 2 moles of water yes or no 2 moles of hydrogen gives rise 2 moles of water ତାହେଲେ 1 mole of hydrogen କେତେ moles of water ବନେଇବ ନା 1 mole of hydrogen will form 1 mole of water 1 mole of hydrogen will form 1 mole of water ବୁଝିପାରିଲ student so this is the simple concept ହେଲା so now we are going to discuss some more questions now these are the three questions based on limiting reagent okay so just quickly go through it then we'll discuss first question is the maximum amount of barium sulfate that can be obtained on mixing 0.5 mole of barium chloride and 1 mole of H2SO4. Second question, in the reaction 4A plus 2B plus 3C gives rise to A4B2C3. What will be the number of moles of product produced starting from 1 mole of A, 0.6 mole of B and 0.72 mole of C. Next third question is phosphine that is PS3 decomposes to produce vapors of phosphorus and hydrogen gas. What will be the change in volume when 100 ml of 100 ml of phosphine is decomposed? When 100 ml of phosphine is decomposed. So quickly note down the question. Then we are going to discuss one by one. So question note कर सारो. जेतले explain कला लोगो I will use whiteboard. Then we'll explain. Quick student. Our limiting reagent concept is one of the most important concepts from this very chapter, that is basic concepts of chemistry or stoichiometry. Hello. I hope all of you are writing the question. Quick.
What happened, Saroj? Just one means not getting your question. Other students, make it fast. Okay, students. Now we can use the whiteboard. Okay, writing the question. Okay, fine. And after solving, you can compare with your answer also. These are the answers given. Okay, students. Now I hope all of you written the questions. So we are going to discuss now. We are going to discuss in whiteboard. Okay, friends. Whiteboard টা দেখ, Zoom র whiteboard. Yes, sir. Okay, students. I hope all of you have written the question. Okay. So first question is, just check. First question is,
the maximum amount of barium sulfate that can be obtained on mixing 0.5 mole of barium chloride and 1 mole of H2SO. Simple question. So the reaction is H2SO4 plus BaCl2, that will give barium sulfate and HCl. So 2HCl, this is the balanced reaction. So it is given that zero point 0.5 mole of barium chloride and 1 mole of H2SO4. Clear? 0.5 mole of barium chloride and 1 mole of H2SO4. So let देखो, it is the balanced reaction. 1 mole of H2SO4 reacts with 1 mole of barium chloride. According to the given data, with respect to 1 mole of H2SO4, 1 mole of H2SO4 is present, but 0.5 mole of barium chloride. So which is the limiting reagent now? This is the limiting reagent. So since we have identified the limiting reagent as the barium chloride, তাহলে product কাହା উপর depend করিব? না product depend করিব barium chloride উপরে. So now from the balanced reaction, 1 mole of barium chloride gives 1 mole of barium sulfate. 0.5 mole of barium chloride should give 0.5 mole of barium sulfate. বুঝা পড়লা? ହେଲା? So this is the answer. I think now it is clear. Next is next question. तब देख परिबो. In the reaction 4A plus 2B plus 3C. 4A, this is first question. Second, 4A plus 2B plus 3C gives rise to A4 B2 C3. Okay, this is the product A4 B2 C3. Acha, then I can dechi. Now what will be the number of moles of product formed starting with 1 mole of A. This is 1 mole of A, then 0.6 mole of B and 0.72 mole of C. 0.72 mole of C. So how many moles of A4 B2 C3 is to be? How many moles of A4 B2 C3 is to be prepared? Tell po how to get the answer. Kem solve kariye po. Tell it देखो. With respect to हमें एक question एमती solve कर परिवा. With respect to 4 mole of A, 1 mole is present. तल 1 mole respect to कितना होगा? ना 0.25. With respect to 2 moles of B, 0.6 is present. 1 mole respect to कितना होगा? ना 0.3. With respect to 3 moles of C, 0.72. 1 mole respect to 0.24. तले तीनटा इधर compare करो. Which is the least one? Least one is the least one is 0.24. Tale 0.24 is the least one. So what will be the number of moles of A4B2 C3? Na 0.24 mole. 0.24 mole. Hello. एमदी हम सॉल्व कर परिबा. एटा ला सिंपल वे जोटा में शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर परिबा. और एमदी लिख परिबो जे 0.72 mole of 0.72 mole of C reacts can react with, or एमदी लिख 3 moles of C react with 2 moles of B. Clear? Second student, disturbance. Yes, student, you can get the PDF after the class. So it is given 0. It is 3 moles of C reacts with 2 moles of B. So 0.72 kete moles से react करिवो, calculate करिके you can get the answer, that is A4 B2 C3 0.24 mole. Okay. अच्छा, next third question. Third question थिला when phosphorus vapor, just 1 minute. Third question देखी दियो, if you have noted, phosphine decomposes to produce vapors of phosphorus. What is the formula of phosphine? Formula of phosphine is
pH3. So after heating, it is giving phosphorus plus hydrogen. Now tell me what is the formula of vapor of the phosphorus? That is not P, rather that is P4. বুঝা পড়লা? That is rather P4. তাহলে phosphine is vapor and P4 is vapor, hydrogen is already gas. So ଆମେ ଯଦି balance କରିବା 4 pH3 gives rise to P4 plus this is 12 means 6 hydrogen. বুঝিপারল? P4 plus 6 hydrogen. তাহলে আমি দেখিবা on the reactant side how many moles of pH3 are present? On the reaction side 4 moles of pH3 are present. So number of gaseous moles 4. ଆଉ product side ରେ କେତେ ଅଛି? ନା 1 mole phosphorus 6 moles hydrogen. তাহলে total number of moles କେତେ ହେଇଗଲା? 7 moles. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 moles of the gaseous reactant is converted to 7 moles of the gaseous product. 4 moles of the gaseous reactant are converted to 7 moles of the gaseous products. তাহলে এটি দেখো ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି 100 milliliter ଅଛି phosphine 100 milliliter ଅଛି ତାହେଲେ କେତେରେ କନଭର୍ଟ ହବ ନା 4 moles converted to 7 moles. ସେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଭଲ୍ୟୁମ ପଚାରିଛି ତା ମାନେ ଆମେ ଏଗ୍ରିଗେଟ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଗ୍ୟାସ ର ନେଇ ପାରିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ର. ତ 4 moles gives rise to 7 moles. ତାହେଲେ 100 milliliter କେତେରେ କନଭର୍ଟ ହବ ନା that is with respect to 1 mole ହେଇଯିବ 25 milliliter. So 7 moles that is 25 into 7 to 175 milliliter. ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ଓକେ ନହେଲେ ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା ତମେ ସିମ୍ପଲ ସର୍ଟକଟ ୱେରେ କରିପାରିବ 100 mole 100 milliliter with respect to 4 moles with respect to 1 mole that will be 25. Yes or no? So with respect to 7 moles that will be 25 into 7. This is one way. और एमती करि परिबा यदि 4 मोल रेस्पेक्ट रहला 175 7 मोल रेस्पेक्ट रे केता हबो ताको हम कैलकुलेट करि परिबो हैला. ताले एटी कम पचार थिला व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम चेंज कोन हबो ना वॉल्यूम इनिशियली थिला 100 मिलीलीटर एबे हला 175 मिलीलीटर. तो वॉल्यूम चेंज हे गेला प्लस 75 मिलीलीटर. बुझि परलो वॉल्यूम चेंज हला प्लस 75 मिलीलीटर. So this is the answer. Okay student, this is what the limiting reagent concept is. ଯଦି ଆଉ କାହା କିଛି doubt ଅଛି ପଚାର, otherwise I am going to discuss one more question. If you have any doubt, quickly write in your chat box. Okay, so now I am going to write one more question. Question is, this is not 0.24 liter, rather that is 0.24 moles. Already question erase कर चलाने ठीक है मैं आउट explain कर दूँगी. तो सेटा थिला A 4 moles of A reacts with 2 moles of B and 3 moles of C to form 1 mole of A4 to form 4A 2B 3C to form A4 B2 C3. ठीक है. So I think it was given as 1 mole. It is 0.6 moles. It is 0.72 moles. बुझ पारलो. अच्छा आमे कोन कहै ना limiting reagent is the one which is present in the least amount or which is present in the least number of moles, right? अच्छा ताले एठी देखो आमे 4 mole respect रे केते अछि 1 mole 1 mole respect रे केते हिजबो 0.25 mole 2 moles respect रे अछि 0.6 mole 1 mole respect रे केते हिजबो 0.3 mole 3 mole respect रे 0.72 1 mole respect रे केते हिजबो 0.24. ता माने आमे यदि गोटे रिएक्टर नबा जोथरे 1 मोल रेस्पेक्ट हम द प्रोजेक्ट कले ए बी सी को तो ए इज कमिंग 0.25 बी इज कमिंग 0.3 सी इज कमिंग 0.24. ताल को
which is the least one? The least one is C. So the least one C hela after projection, so that must be the limiting reagent. जोटा कम थिबो ताकू ही हमें limiting reagent बोली consider करिवा. So since C is the limiting reagent, then that is going to be consumed first. से आगो consume हे जिवो आउ product formation को C ही control करिवो. ताले हमें कोन कहि परिबा ना 0.72 moles of C is converted into 1 mole of A4B2C3. ये C केते अछि 3 moles अछि. तो 3 moles respect 0.72 हैला 1 mole respect केते हिजबो ना 0.72 divided by 3, that is coming as 0.24 mole. Okay, student, I think one was asked. Okay, now to explain the question number 3 again. Okay, no problem. Question number 3 is given as the phosphine pH3 when heated, that gives vapors of phosphorus. So vapors of phosphorus, that is P4 and hydrogen gas. Which fellow student? Phosphine undergoes decomposition to form vapors of phosphorus and hydrogen gas. So let me balance kariba. So this is 4pH3 and this is 6 hydrogen. Which fellow? So HM kon noche, the reactants and products all are present in the gaseous form. So the gaseous form रे समस्त present अछंती, तो simple kon नहीं परिवा. Now this is 7 mole and this is 4 moles. Clear? 2050 रे बुझ पाला तो हम ताको टोटल gaseous form में नहीं गेले. तो reactant product एठी हमर एमिति पचारने जे हाइड्रोजन केते चेंज होबो कि फास्फोरस केते चेंज होबो. सिंपली पचारची टोटल वॉल्यूम रे केते चेंज होबो. ताले हमर रिएक्टेंट केते थिला 4 मोल, प्रोडक्ट केते अछि 7 मोल. ताले 4 moles of reactants are converted to 7 moles of the product. अच्छा, तो तमे जानथिबो एवोगाड्रोस लॉ गोटे अछि, फर्स्ट चैप्टर दिया अछि. एवोगाड्रोस लॉ रे कोन दिया अछि ना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स when pressure and temperature are constant. So here pressure temperature किछ मेंशन करा है नहीं, we can use the Avogadro's law. So Avogadro's law कौन देछि, volume is directly proportional to number of moles. Clear? अच्छा, ताले 4 mole is converted to 7 mole. Clear? 4 mole is converted to 7 mole. ताले 100 milliliter जदि अछि, तो 100 milliliter केतरे convert हबो को 100 milliliter केते convert हबो ना, that is 100 upon 4 into 7, so it is 175 milliliter. बुझ परलो तमे एटा अवोगाड्रोस लॉ रो हेल्प नै करि परियो. 175 milliliter ओरिजिनली केते थिला 100 milliliter, एबे कन्वर्ट केते रहला 175 milliliter, चेंज केते हला 75 milliliter. ए जो चेंज हला दैट इज प्लस और माइनस ना, जो चेंज हला दैट इज प्लस. ताल वॉल्यूम केते इंक्रीज हला ना, वॉल्यूम इंक्रीज हला 75 milliliter इंक्रीज. ओके, so student, I think from SCS college one student has raised the hand. Is that clear? Okay, so any other doubt? If any other doubt is there, then you can quickly ask. Okay, clear, very good. Any other doubt, student? A is 1500 limiting. A is 1500 clear helani kon question pacharcho student. We are discussing some of the questions because you know all the questions cannot be discussed in the class. किछि किछि important question, किछि simple question starting जेहेतु हम करते simple question नउचे, so you can take the help of different books. Different book जहाँ भी तुम पाखे available अच्छी, सबू book रे सबू concept कितना किछि अच्छी, तो तादरू तमे क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस करो हैला. कॉन्सेप्ट बुझ परला, क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस करो. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कले तमरो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आसुची कि नै तमे जानि परिबो. खाली थ्योरी तले किछि होबनी. ये चैप्टर बेसिकली कहूची स्टोइशियोमेट्री चैप्टर. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे, बट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन बहुत आसे हैला. तो सेति पे तमे कोन करो ना, डिफरेंट बुक तमे जहां भी बुक तम को बुक रे ना नोनी, जहां भी बुक तम पाखे अवेलेबल अछि, सब बुक रे सब कांसेप्ट अछि. बुझि पड़ता ना नहीं, तो क्वेश्चन तमे सॉल्व करो. तमे नीट पे प्रिपरेशन करो और जेई एडवांस में प्रिपरेशन करो, जेई मेन पे प्रिपरेशन करो, और जहां भी तमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओयूएटी, जहां भी तमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपरेशन करू तो सीयूईटी प्रिपरेशन करो, किछि क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके स्टूडेंट्स,
So thank you all, and thank you DHSC for giving me the opportunity to interact with all the students from different corners of our state. Okay, thank you very much.
Students, good afternoon. Now, am I audible? Can anyone write in chat? Only write yes if I am audible to you. Anyone? Thank you. And the video is clear. Is the video clear? Okay, very good. Thank you. Student, in last class, we have just recapped the mole concept. Then we have discussed concentration unit, right? So if you have any doubt, quickly ask. Then we are going to uh, proceed further related to concentration unit. Today we'll discuss the concentration unit, then concentration upon dilution or concentrated solution, then concentration upon mixing, then percentage yield, percentage purity, combustion reaction, then limiting reagent. So these are the some of the topics we are going to discuss today. So if anyone has any doubt, quickly you can write in your chat box. Okay, no problem. After towards the end of the Recording in class, also you progress. can ask. Okay, student. Now, uh,